Boss, it's very confusing, it's toxic क्योंकि रोज़ हर नए दिन इनके सोच बदल रहा है, इनके स्टैंड्स बदल रहे हैं, सो इट गेट्स वेरी टॉक्सिक इवन फॉर द पीपल हु आर अराउंड. और मैंने ये चीज़ टीना और शालिन के मुंह पे भी बोला कि भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आप लोग पता नहीं कैसे इस चीज़ को 3 महीने से हैंडल कर रहे हो. मैं आप लोगों के आसपास रह के आई एम फीलिंग इरिटेटेड, but it's not about a woman smoking or a man smoking, so you cannot be racist about these facts. That a man can smoke, then it's not injurious for him, but if a woman smokes, क्योंकि दोनों के सेहत के लिए smoking is in general injurious to health, so we should not do it. Hi, this is Sreejita Day and you are watching me on PeepingMoon.com. Hello everyone, welcome to PeepingMoon.com. I am Rashita Sahni and today I'm a little shocked to be talking to Sreejita, who's out of the Bigg Boss house. Hi Sreejita, how have you been? I'm very good, very happy to hear that you are shocked that I'm out, but I'm doing well. Glad to hear that, because a lot of times when you come out of the house you're not in the right state of mind. But yeah, I'm sure I was just going through a few tweets before this interview and people are as shocked as me, because honestly I remember your re-entry and it was very fresh, and whatever you were doing, I don't know if that was a plan. I don't really think it's ever a plan inside the Bigg Boss house, but it felt like you are going to go at least to the top 7, top 5. We did imagine you there. Was it as shocking for you? Honestly, first of all, I would like to say that no plans work inside the house, because your plan would be around you and there are another 12 contestants whose plans would be also around them. So everyday plans are changing. हर दिन सुबह उठ के नई कहानी शुरू होती है और किसी के कोई प्लान या स्ट्रैटेजी काम नहीं करता. इट्स अ मिथ जो हर कोई पूछते हैं आपका स्ट्रैटेजी क्या है, आपने कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई. किसी के लिए, कोई कंटेस्टेंट के लिए इट डजंट वर्क. I was little sad, but on the other hand, you know what, I had this whole feeling of being grateful, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे दोबारा से मौका मिला 7 हफ्ते के बाद, जो आज तक कभी नहीं हुआ है बिग बॉस हिस्ट्री में कि कोई एक्स कंटेस्टेंट हैज़ गॉन इनसाइड द हाउस आफ्टर 7 लॉन्ग वीक्स. तो मुझे ऑलरेडी पता था कि ऑडियंस के साथ जो कनेक्टिविटी बाकी लोगों की है वो मैं खो चुकी हूँ, क्योंकि 7 हफ्ता इज़ ऑलमोस्ट नियर टू 2 months जब मैं घर के अंदर नहीं थी एंड द शो पीक्ड अप. So I have to make everything from base and zero, though I was inside the house initially for 2 weeks, but there was a disconnection in between. Or I tried my level best to build everything from the base and go ahead as much as I could. पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था हाँ मुझे अगर मैं ट्रॉफी नहीं जीती तो I would be very upset, because I wanted to take it in a more positive way कि श्रीजिता तुझे चांस मिली है वापस जाने का. You were so sad last time, you were so disoriented last time after getting eliminated. तो तुम्हें चांस मिली है, उस चीज़ को अप्रिशिएट करो और हर दिन यहाँ पे एक नया दिन है और हर दिन को एंजॉय करो और जहाँ तक आप रह सकते हो वहाँ तक रह के इस जर्नी का मज़ा लो. And yeah, but would have been definitely more happy if I could have gone at least till the semi-finals or finals. I'm sure, but I don't know about the fan following. They keep saying Sumbul, MC Stan have massive fan following, but I don't see them do a lot of things inside the house. As in, their screen space is much lesser than the other contestants. They're still in. Who did you expect, if not you, to be out this week? This week, actually, I thought it would be Saundarya, but Saundarya was somehow not in the lost category. और शायद मैं घर के अंदर एक दो बार थोड़ी सी क्रिप कर रही थी कि मुझे क्यों lost category में डाला गया है. It's just been 5 weeks I'm in the house and I think I was doing something, maybe not a lot, but something. And like valid things, not just invalid random things. तो but it was there, like Bigg Boss ने बोला कि किसी ना किसी reason से हर contestant को हमने ये categories में divide किया है. If I was not there, then I thought Saundarya could have replaced me in the lost category, and
बट अगर फिर भी नहीं होता, जो भी 4 लोग थे उसमें भी आई वॉज एक्सपेक्टिंग सुम्बुल, क्योंकि मैं भी जब घर के अंदर थी मैं बार बार उसको जगाने की कोशिश कर रही थी. इनफैक्ट मेरी एंट्री के टाइम पे भी मैंने सुम्बुल से बात की कि वाई आर यू गेटिंग लॉस्ट, यू आर नॉट हियर टू आयरन क्लोथ्स एंड यू आर नॉट हियर टू ओनली कुक फूड, क्योंकि इट्स नॉट अ कुकिंग शो. ठीक है, आप अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप करो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाओ कि आप कौन हो. एंड आई रियली फील little bad for that girl sometimes because she's very young and she genuinely feels lost sometimes in that house. तो मुझे कभी कभी मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर सा फील होता है उसके लिए. आई रियली लाइक हर, बट आई थिंक आउट ऑफ द 4 शी कुड हैव लेफ्ट द हाउस, क्योंकि उनको 15 हफ्ता मिला और मुझे इन टोटल 7 हफ्ता मिला. सो मे बी आई कुड हैव स्टेड लिटिल मोर लॉन्गर एंड इट कुड हैव बीन हर. Correct. But I remember when you entered the house again, you were amongst the first very few people who actually called out the Shalin Tina thing that was happening when you hugged him and you sort of told him, gave him a hint what's happening and how is it being shown outside. And then, of course, Salman and everyone, whoever's entering, is questioning and sort of slamming their relationship, which is being termed as fake. As someone who has lived with them inside, what is your stand on that? I think of course it's very confusing, it's toxic, क्योंकि रोज़ हर नए दिन इनके सोच बदल रहा है, इनके स्टैंड्स बदल रहे हैं. सो इट गेट्स वेरी टॉक्सिक इवन फॉर द पीपल हु आर अराउंड. और मैंने ये चीज़ टीना और शालिन के मुंह पे भी बोला कि भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आप लोग पता नहीं कैसे इस चीज़ को 3 महीने से हैंडल कर रहे हो. मैं आप लोगों के आसपास रह के आई एम फीलिंग इरिटेटेड. From Tina's side, what everybody feels, even in the house and outside, that it is fake. But Shalin के साथ इस बार somehow I had shared a bond, जो मैं बिल्कुल expect नहीं कर रही थी, because I had a perception about Shalin that he is absolutely fake. Of course he is fake. Of course he acts sometimes, or most of the times. But you know what? He is that character. मतलब fake is real for him. That's what I realized this time in the house, and that's when we got closer and we became friends. And I think he is a person who loves to live in a parallel world. जो मैंने उनको भी बोला है, तू parallel world में रहता है. He lives in a bubble. So actually fake is real for him, acting is real for him. That's how he is. So I don't think he was, I think genuinely he cared about Tina and he did a lot through these 3 months for her. But from Tina's side, I don't understand. But one thing I would like to bring up today is that no one in the house actually stood up when MC Stan used to really give those sexist remarks. You were the only one who actually called him out when he said, "मैं औरतों से बात नहीं करता," and then you sat him down in that little zone and you told him, explained him, but he was just not ready to agree. Firstly, kudos to you for taking that point up, because no one, I was shocked and surprised that why is anyone not speaking up? There were so many women, men, everyone inside the house, gender no bar, but you actually took that up, and so many people actually lauded you outside, by the way. You will go through the comments, you'll get to know. What did you feel when that entire incident happened? I somehow don't like these kind of remarks. क्योंकि पहले भी जब मैं घर के बाहर थी तो मैंने एक एपिसोड में सुना उसको कहते हुए, यार लड़की होके सिगरेट पीती है. तो स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, वी ऑल नो, बट इट्स नॉट अबाउट अ वुमन स्मोकिंग और अ मैन स्मोकिंग. सो यू कैन नॉट बी रेसिस्ट अबाउट दीज facts that a man can smoke, then it's not injurious for him, but if a woman smokes, क्योंकि दोनों के सेहत के लिए स्मोकिंग इज इन जनरल इंजरियस टू हेल्थ, सो वी शुड नॉट डू इट, मे दैट बी मैन और वुमन. तो वो भी मेरे दिमाग में था, और उस दिन वापस से शायद आई थिंक नॉमिनेशन टास्क में उसने प्रियंका को ये चीज़ बोला कि मैं औरत से बात नहीं करता. एंड आई हर्ड इट, आई डिडंट कन्फ्रंट हिम राइट देयर बिकॉज देयर वाज अ डिफरेंट टास्क गोइंग ऑन. लेटर माई होल पॉइंट वॉज कि तूने ऐसा बोला क्या, क्योंकि मैंने ऐसा सुना. एंड ही इमीडिएटली रिएक्टेड. फर्स्ट ही वॉज नॉर्मल and normally explaining me, and then suddenly he reacted, and all I wanted to tell him that मतलब ये कोई कमेंट नहीं होता है. आप ये क्यों बोलना चाहते हो कि आप औरत से बात नहीं करते हो, तो ये बोल के आप ये दिखाना चाहते हो कि आप सुपीरियर हो. तो ये पुराने ज़माने में लोग बोलते थे ना, हम दासियों से बात नहीं, हम औरत से बात नहीं करते. सो दैट वाज अ वेरी like regressive
comment for me. पर उसने जो explanation मुझे दिया था उसने ये बोला था कि मैं ये कहना चाहता था कि मैं तुझ जैसे औरत से बात नहीं करता. So I was like, then be more specific. You can't just generalize terms, and that's not okay for me. I'm sure. But thank you so much, Sreejita. You really got that freshness into the house. We will miss that. But all the very best for all your future projects. Thank you so much. Thank you. Most